Good morning, Royal Stars. How are you? I hope you all are fine. Today we will do dictation. I'm sure you already know about it, but shall we revise it once again? First of all, student, what do you mean by dictation? They are the random numbers, okay? These are the random numbers. What ma'am or other one is going to say, and you have to write down in your notes and notebook. Means whatever you're hearing and writing, that is your dictation. से किड्स रैंडमली मीन्स क्या होता है, नॉट इन सीक्वेंस. ये आपको सीक्वेंस में हम नंबर नहीं स्पीक करेंगे, बीच बीच में से स्पीक करेंगे. वह गेट द नंबर्स, आपको बीच बीच में से जो भी नंबर्स बोले जाएंगे वो आपको राइट करने हैं. यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक्स. ओके, सो शैल वी स्टार्ट. टेक आउट योर पेंसिल एंड इरेजर. सो राइट हियर firstly 34. Okay, speak with me. 34. What will be used for 30? 30 के लिए क्या यूज करेंगे? 3. Write here 3 for 34. Like this sleeping line, goes and move back and make a circle like this semicircle. 34. Standing line, goes and touch with the box line. Okay. Sleeping line. Look at the formation carefully. Speak and write. You have to speak and write 34. You have to use for 30. 30 के लिए हम क्या यूज करेंगे? 3. 34. Next 3 for 34. After write down 89. What will we use for 80? 80 के लिए क्या यूज करेंगे? 8. Put your pencil here. How to write 8? Go turn, touch the box line and go turn around. Go down, slant. Again turn, cut on this point and touch. 89. Make a standing line like this, turn and turn around like this. 89. Speak again. 89. Next 46. Right here 46. What will we use for 44? Look at the movement of my hand. Firstly you have to standing line, make a standing line, slanting line, sleeping line like this. 46. Right here 6. 46. Next 12. How to write 12? 1 to 12. Small tail and standing line like this. 1 2. Put your pencil here like this. Turn like this round. Go slant and sleeping line. 1 to 12. Next write down 8. 8 से पहले हम क्या राइट करेंगे? सिंगल डिजिट है तो 0. राइट हेयर 0. फर्स्टली 0. 8. Turn around like this. Go slant down, touch the box line and go up, turn like this. Cut on this point and touch. 8. Speak again. 3 4 34. 8 9 89. 4 6 46. 1 2 12. आप इसको 8 ही स्पीक करेंगे, 0 नहीं साथ में स्पीक करेंगे. स्पीक 8. एंड नेक्स्ट राइट हेयर 106. 100. व्हाट विल बी यूज फॉर 100? किसकी साउंड आ रही है? 1. स्मॉल टेल एंड स्टैंडिंग लाइन. 106. सिंगल डिजिट से पहले हम क्या यूज करेंगे? 0. 106 like this. Okay, 106 done. Next 125. 100. किसकी साउंड आ रही है? What will we use for 100? 100 के लिए क्या यूज करेंगे? 1 small tail and standing line. 1. 20. 20 के लिए 2. 2 5 25. 125. Sleeping line, half, standing line and semicircle. 125 done. Next 193. 100. Speak and write 90. 90 के लिए 9. Standing line, turn and round. 93. Sleeping line, go slant, go move back and semicircle. 193. Next
118. 118. Small tail and standing line. How to write 18? 1 8 18. Small tail and standing line. Put your pencil here. Turn. Go down. Slant. Touch the box line like this. Turn again. Cut on this point and touch with. 118. Next 110. Small tail and standing line. 100 के लिए क्या यूज करेंगे? 1. How to write 10? 1 0 10. Small tail and standing line like this. 0 1 0 10. Speak and write. Thank you, student. And student, do this work in your notes, and together you have to practice by writing again and again on the notebook. Okay? आपने अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करनी है. अपने मम्मा को कहना है कि आपको डिक्टेशन स्पीक करेंगे और राइट करनी है. ओके? हैव अ गुड डे.